Welcome back, student. In today's video, we are going to multiply 3-digit numbers with 2-digit numbers. All right. So let's read the question together. A book costs 31 rupees. एक book की cost क्या है? 31 rupees. ठीक है. And we have 127 books. ठीक है. What is the cost of 127 such books? और अगर मेरे पास 127 books हो तो मुझे क्या find करना है कि हर book की कीमत ऑल टुगेदर कितनी होगी. सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई. सबसे पहला स्टेप क्या है? वी आर गोना राइट द नंबर्स ओवर हियर और हमारे नंबर्स हम लिखेंगे. सबसे पहला बिगर नंबर, ऑलराइट, 127, and then we'll write the smaller number, that is 31. Alright, let's put a multiplication sign over here. And what's the first step that we are going to follow is multiply ones. ठीक है. हमने क्या करना है? ये जो नंबर वंस यहाँ पे हमें वंस की नंबर पे दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करना है. वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई वंस विद 7. 1 7s are 7. Then we'll multiply 1 with 2, that is 2. Then we'll multiply 1 with the number 1 over here, and the answer is 1. Alright. अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि बिफोर वी स्टार्ट मल्टीप्लाइंग द नेक्स्ट नंबर, टेंस को मल्टीप्लाई करने से पहले वी गोइंग टू पुट 0. ठीक है. सबसे पहले क्या करेंगे? हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे. एंड देन वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट स्टेप, और वो क्या है? मल्टीप्लाई द टेंस. जो हमें टेंस का नंबर दिया हुआ है दैट इज 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो व्हाट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 7? 3 7s are, let's do a rough work over here. 3 7s are 21. Alright, now we have 2 digits over here. We're not going to put it over here. We're just going to put the first, that is 1's number over here, और इसको हम यहाँ लिखेंगे 1, और हम बाकी जो साथ उसके 2 है जो 10 के नंबर पे आ रहा है उसको हम नेक्स्ट नंबर पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे. क्या कर देंगे? कैरी फॉरवर्ड. Alright, so now I'm going to multiply 3 with number 2, or 3 2s are 6. What is 3 2s are 6, and 6 में हमने क्या ऐड करना है? The number 2 that was carry forward. So the answer is going to be 3 2s are 6 7 8. We're gonna write over here 8. Okay, अब हमने क्या करना है? लास्ट हमारा रह गया 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. The answer is going to be 3. राइट, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर सेम आता है. अब हमने क्या करना है? द नेक्स्ट स्टेप इज नंबर 4 स्टेप इज ऐड बोथ नंबर्स. ऐड द बोथ नंबर्स. ठीक है. 7 प्लस 0 इज 7. लेट्स चेंज द कलर ऑफ द पेन. 7 प्लस 0 इज 7. ठीक है. 2 प्लस 1 इज 3. 1 plus 8 is 9, and let's write 3 over here. ठीक है. तो हमारा आंसर आ गया है, और वो क्या है कि हमारी इन बुक्स की कॉस्ट क्या है? इन बुक्स की कॉस्ट है 3937. So let's look at another example and practice it together. ठीक है. हमें 2 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, हम इनमें से कोई भी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं. So we're gonna do this number 321. सबसे पहले इनको हम प्लेस करेंगे हम अपनी प्लेस वैल्यू चार्ट में. 321, और इसको मल्टीप्लाई हमने किससे करना है? 42 से. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लाइंग. सबसे पहले हमने स्टेप 1 लिखा यहाँ पर कि वो क्या है कि वी गोना मल्टीप्लाई वंस को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. दैट मीन्स इस केस में 2 को करेंगे. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6. ठीक है. हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने पुट 0 बिफोर स्टार्टिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंस. ठीक है. तो पुट 0 इन नेक्स्ट लाइन. ये भी आपने दिमाग में रखना है क्योंकि समटाइम्स यू फॉरगेट वेयर डू यू हैव टू पुट द 0. ठीक है. पुट 0 इन द नेक्स्ट लाइन. तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं. ठीक है. एंड द थर्ड रूल हमने क्या फॉलो किया था कि मल्टीप्लाई द tens. So we are going to multiply the tens. 4 1s are
4, 4 twos are 8, and 4 threes are 12, right? So we're gonna put the 12 together. Okay, and now the last step is we have to add both of these numbers. ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे add both numbers. ठीक है, ये 4 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं और ये क्या है कि अब हम इसको ऐड करेंगे. 2 plus 0 is 2. I don't know why I can't see the. Okay, 2 plus 0 is 2. 4 plus 4 is 8. We have 6 plus 8. What is 6 plus 8? 14. 4, 1 carry forward, right? 2 plus 1 is 3, and we have 1 as a test. So the answer we have over here for this number is 13,482. Alright, so I want you guys to practice this question yourself. Write it in a rough copy and practice it right now by following these 4 steps. I hope you guys understand it. See you guys in the next video.